Hello web developers, let's create this type of glow neon title animation, okay, by using HTML and CSS. This is very simple program for every web developer. Okay, so let's start. Okay, now we are in VS Code and let's create a folder for our program. Okay, so our program name is glow neon title. Okay, and create a file index.html and create one more file style.css for CSS design. Okay, so now move on to HTML file and create basic boilerplate of HTML by using shift and exclamation mark. Then title is glow neon title. Then link style.css. ओके, और गिटहब को पायलट को लॉन्च कर देंगे. ओके, then create s1 tag with class name neon. ओके, टाइटल कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट ले लेंगे, पोस्ट योर जॉब, ऐसे ही जो हमने प्रीवियस लिया था वही ले लेंगे, या और भी आपको चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर सकते हो. ओके, और इसको हम लाइव सर्वर पर रन कर देंगे. ओके, कुछ अभी हमारा पोस्ट योर जॉब इस तरह का हमारा दिख रहा है टाइटल. ओके, ओके, देन फर्स्ट बॉडी टैग, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड हाइट 100 vh. Okay, then background white. Okay, dark little, then neon, font size 44 pixel, and कलर क्या लेंगे हम, रेंडमली कुछ भी ले लेंगे. ओके, थोड़ा डार्क लेंगे इसमें, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं. then text shadow 005 pixel, and let's take this color, comma 00 10 pixel, 10 pixel या 15 pixel, कुछ भी 10 ही ले लेते हैं. then color SMS previous one, comma 00 and 20 pixel, and this color, right. Okay, then animation, एनिमेशन क्या लेंगे हम, ग्लो 1.5 second, infinite alternate. Okay, then at the rate keyframes, identifier glow from from opacity 0.7 to opacity 1. Okay, so this is glows now. Okay, it is glowing. Okay, so our program is perfectly working for this glow neon title animation. Okay, by using HTML and CSS. Okay, so thanks for watching.